Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us describe concept and meaning of hearing impairment. Hearing impaired children are those children who possesses defect in the sense of hearing, as senses are called the gateways of knowledge. Every knowledge is received through different sensory organs, like sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, by and large sense of touch. Researchically, it has proved 90% knowledge is received through two senses, sense of sight and sense of hearing. Dear students, hearing impaired children are those children who possesses defect or deformity in the sense of hearing. इन बच्चों में ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है, आई मीन टू से यू हियरिंग लॉस होता है. दैट इज वाई these children are facing problems in day-to-day life. ये different tasks और activities को perform नहीं कर पाते हैं because of hearing loss. Hearing loss may be mild, moderate. It may be also severe and profound. अगर hearing loss mild या moderate होगा, we call those children hard of hearing. That is why hard of hearing children are those children who do not hear clearly. ये सुन पाते हैं लेकिन clearly सुन नहीं पाते हैं, यानी कि इन्हें ऊंचा सुनने की आदत है, इसीलिए इन्हें hard of hearing कहा जाता है. अगर hearing loss severe और profound होगा, we call them deaf children. Deaf children are those children who do not hear completely. इन बच्चों में round about 100% hearing capacity loss हो चुकी होती है. इसीलिए deaf children always possesses more complex problems, especially in terms of communication, as compared to the hard of hearing children. Dear students, now we will focus on various definitions of hearing impairment. Number 1, World Health Organization. According to World Health Organization, hearing impairment is defined as a decrease in the ability to hear sounds, ranging from mild to profound. यानी कि hearing impairment को हम define करते हैं by means of hearing loss. It is basically the degree of hearing loss by which we categorize the hearing impaired children. There are 4 levels of hearing loss: mild level, moderate level, severe level, and last level is profound level. When the child possesses the mild hearing loss, we call the child mildly hearing impaired. अगर बच्चे में moderate hearing loss होगा, we called to the child moderately hearing loss child. If the child possesses severe hearing loss, we call to the child severely hearing impaired. और इसी तरह से अगर profound hearing loss होगा, we call to the child profoundly hearing impaired. Number 2, American Speech Language Hearing Association. Hearing impairment refers to a range of auditory challenges, including hearing loss, deafness, and auditory processing disorders,
affecting an individual's ability to communicate effectively, keeping in view the American Speech Language Hearing Association. How hearing loss affects the communication ability possessed by an individual. Dear students, अगर hearing loss ज़्यादा होगा तो communication problem भी ज़्यादा होगी. That is why there is the close relationship between hearing loss and communication of an individual. We learn the language on the basis of hearing ability. There are two types of deaf children. एक deaf child को कहते हैं हम prelingual deaf और दूसरे deaf child को हम कहते हैं postlingual deaf. Prelingual deaf is that deaf child who lost the hearing capacity before acquiring a language. Mostly prelingual deaf जो होते हैं वो by birth deaf होते हैं, माँ की कोखी से वो deaf होते हैं. इसीलिए जो प्रीलिंगुअल डेफ होता है उसमें दो किस्म के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं. वन, हियरिंग इंपेयरमेंट, सेकंड, लैंग्वेज इंपेयरमेंट. वो बोल नहीं पाता है क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है हियरिंग. विदाउट द हियरिंग, विदाउट द लिसनिंग, वी कैन नॉट कम्युनिकेट. दैट इज़ वाई हियरिंग लॉस को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एबिलिटी. ज़्यादा हियरिंग लॉस होगा उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इसीलिए जिन बच्चों में सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है उनमें उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पाई जाती है. माइल्डली और मॉडरेटली हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों में कम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है क्योंकि उनमें हियरिंग लॉस कम होता है. डियर स्टूडेंट्स, जो पोस्ट लिंगुअल चाइल्ड है, पोस्ट लिंगुअल चाइल्ड इज दैट वेरी डेफ चाइल्ड हु लॉस्ट द हियरिंग कैपेसिटी आफ्टर एक्वायरिंग द लैंग्वेज. यानी कि बच्चे ने लैंग्वेज हासिल की और उसके बाद वो डेफ बन गया. The person lost the hearing capacity after acquiring a language. किसी भी cause से auditory system जो है वो डैमेज हो गया, लेकिन उसने लैंग्वेज सीख ली. जितनी की उसने लैंग्वेज सीख ली उतना वो कम्युनिकेट कर पाएगा, और जितना नहीं सीखा उसने तो वो उसके बाद कम्युनिकेट वो नहीं कर पाएगा. तो नटशल में हम कह सकते हैं hearing loss is closely related to the communication. जितना कि hearing loss होगा उतनी communication problem ज़्यादा होती है. Number third, according to Center for Disease Control and Prevention, hearing impairment refers to a diminished ability to hear sounds, and it can impact individuals' daily life, communication, and social interactions. Dear students, how hearing loss affects communication of an individual, social interactions of an individual, by and large, daily life activities of an individual. There is the close connectivity between the hearing loss and performance of the daily activities. जिस इंडिविजुअल में हियरिंग लॉस पाया जाता है, या हम सिंपली कह सकते हैं हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे जो है हियरिंग लॉस की वजह से वो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. दे आर फेसिंग नंबर ऑफ एंड डिफिकल्टीज while performing different types of activities or tasks. For instance, personal hygiene, taking meals, school work, by and large household work. चाहे घर का काम करना होगा, स्कूल का काम करना होगा, या अपने लाइफ स्किल्स को फॉलो करना है. हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे ये काम नहीं कर पाते हैं, या इन्हें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए
बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. Apart from it, they are by and large facing the problems of communication vis-a-vis the social interactions. ये दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. इसीलिए रिसर्चिकली इट हैज़ प्रूव्ड कम्युनिकेशन की वजह से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, एज कम्पेयर टू द विजुअली इम्पेयर्ड, because due to the hearing loss. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss classification of hearing impairment. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.